गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन गैग ऑर्डर्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट की है अरेस्ट से एक पॉडकास्टर और इन्फ्लुएंसर को बेस्ड अपॉन एफआईआर जो उनके अगेंस्ट रजिस्टर हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली रूल किया है गैग ऑर्डर्स के अगेंस्ट, जो कि इंडिविजुअल्स को जब बेल देनी होती है तो जो अगर गैग ऑर्डर्स होते हैं उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्टैंड लिया है और कहा है कि ऐसी जो है स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने खुद जो है लेकिन स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगा दी हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट और कहा है कि उन्हें कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करना है। तो बेसिकली एक गैग ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की ही रूलिंग्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो गैग ऑर्डर का मीनिंग होता है जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू जो जब हम किसी इंडिविजुअल को रोकते हैं कि वो कोई पब्लिक स्टेटमेंट्स ना दे। ठीक है, जैसे सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पब्लिक स्टेटमेंट देने से किसी को रोक सके अगर ज़रूरत पड़े लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स के कंटेक्स में। तो ऐसे ही पब्लिक डिस्कशन अगर कोई ऑन गोइंग लीगल केस चल रहा है उस पर जो है रोकी जा सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंडर। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने को कहता है फ्री स्पीच के ऊपर सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, कोर्ट्स ने कंसिस्टेंटली रूल किया है स्पीच रिस्ट्रिक्शंस जो है वो प्रोपोर्शनेट और जस्टिफाइड होने चाहिए। अब जजेस के पास ये डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कैसी कंडीशंस लगाएंगे बेल या इंटरिम रिलीफ देने में। ठीक है, तो कोर्ट्स ने रूल किया है कि जो एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ये फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं करती होनी चाहिए। लीगल एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया बैन जो लगाया गया है वो बहुत एक्सेसिव है। अगर आपको खतरा लग भी रहा था तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट हो या फिर मीडिया रेगुलेशंस जो हैं वो इनफ ऑल्टरनेटिव लीगल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं रादर दैन उस पर्सन की स्पीच को आप आउटराइट बैन कर रहे हो। ठीक है, तो कोर्ट्स ने को डिफ़ाइन करना चाहिए कि स्पीच रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कब बेल कंडीशंस पर लगाई जा सकती हैं। गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों को एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा रेगुलेशन और स्पीच फ्रीडम्स पर। गैग ऑर्डर जो है वो टाइम बाउंड होने चाहिए और सब्जेक्ट टू रिव्यू भी होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूजीसी केयर लिस्ट स्क्रैप्ड। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी ने डिसाइड किया है डिसकंटिन्यू करने को यूजीसी केयर लिस्ट ऑफ क्वालिटी एकेडमिक जर्नल्स को, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। ये एक सेट ऑफ सजेस्टिव पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है फॉर सिलेक्टिंग जर्नल्स बेस्ड ऑन 8 क्राइटेरिया। तो यूजीसी केयर जो है वो 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रॉब्लम ऑफ प्रेडेटरी जर्नल्स को की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। जर्नल्स जनरली जो क्या होती हैं क्या करती हैं, पब्लिशिंग फ़ीस के एक्सचेंज में जो है वो जो जर्नल्स पब्लिश कर दी जाती हैं और उसका कोई पीयर रिव्यू भी नहीं हुआ होता है। तो पब्लिकेशन जो जर्नल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग में, फैकल्टी के अपॉइंटमेंट्स में, प्रमोशंस में, रिसर्च ग्रांट्स में। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं क्रेडिबिलिटी को। तो सब स्टैंडर्ड या प्रेडेटरी जर्नल्स अगर जो है वो चोरी करके पब्लिश की जाएंगी कुछ फ़ीस के फ़ीस लेके, तो उससे एकेडमिक इंटेग्रिटी और इंडिया की ग्लोबल रिसर्च रेपुटेशन पर खतरा हो सकता है। तो 2019 में भी यूजीसी ने हाईलाइट किया था कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जब डूबियस जर्नल्स पब्लिश कर दी जाती हैं, लॉन्ग टर्म एकेडमिक डैमेज होता है इससे। तो एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2018 में लगभग 300 ऐसे पब्लिशर्स थे जो प्रेडेटरी जर्नल्स इंडिया में पब्लिश करते थे। ठीक है, बहुत ही कम पैसों में। तो इन कंसर्न्स के बाद यूजीसी ने जो है ये यूजीसी केयर 2018 में इंट्रोड्यूस किया था और यूजीसी सेल जो है वो असेस करता था जर्नल्स को कि उसके स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स के प्रोटोकॉल्स के बेसिस पर। तो इसको फिर अब विड्रॉ क्यों किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि इससे ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गई थी जर्नल की क्वालिटी को डिसाइड करने में, डिले हो रहे थे ऐड या रिमूव करने में जर्नल्स को, लिमिटेड इंक्लूसिविटी थी जैसे कि तमिल स्टडीज़ जैसी फील्ड है उसमें जो है वो ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, हाईली रिस्पेक्टेड इंडियन लैंग्वेज जर्नल्स की जो है को एक्सक्लूड किया जा रहा था। तो यूजीसी ने आर्ग्यू किया कि अब जो डिसेंट्रलाइजेशन हम कर रहे हैं इससे कॉम्बैट तो होगा प्रेडेटरी जर्नल्स को और इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपनी जर्नल्स को इवेलुएट करने में। फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी उन्हें कि वो अपने खुद के मैकेनिज्म्स बनाएं यूजीसी के पैरामीटर्स के हिसाब से। और यूजीसी ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी जो है वो रिव्यू करने को फॉर्म की है 2023 में। उन्होंने भी यही कहा था कि इसको जो है वो अब आप डिसेंट्रलाइज करो। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईएफसी ने रिसेंटली डिसाइड किया है अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन अ $40 million लोन जो वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन प्रोजेक्ट्स में जाना वाला था गुजरात में। तो ये एक प्राइवेट लैंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक की, आईएफसी। 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये फाइनेंस करती है प्राइवेट एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट को के लिए पैसा देती है, एडवाइजरी सर्विसेज भी देती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, कैपिटल भी मोबिलाइज करके देती है बाकी के लैंडर्स या इन्वेस्टर्स से। ओन्ड एंड गवर्नड बाय है ये मेंबर्स कंट्रीज़, और प्रेसिडेंट जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के होते हैं वही इसके प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने फर्स्ट फेज़ जो है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टेचुटरी बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है ताकि क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन जो है वो हो सके इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। 29 इसके मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इसमें चेयरपर्सन, पार्ट टाइम मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स होते हैं 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स के। तो इसका काम होता है पॉलिसीज़ को फ्रेम करना ताकि रेगुलेट हो सके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल प्रोफेशनल्स इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं HQ5 COV2। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक न्यूली डिस्कवर्ड बैट कोरोना वायरस है जो कि कोविड-19 के कोविड वायरस की तरह था, सार्स कोव की तरह है, वो अभी मिला है चाइना में ही ऑफ कोर्स। तो ये मर्बीको वायरस सब जीनस को बिलोंग करता है जो कि वही सेम वायरस है जो कि मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी ह्यूमन एज टू रिसेप्टर्स को बाइंड करता है, और इसकी लेकिन लोअर बाइंडिंग एफिनिटी है ह्यूमन एज टू रिसेप्टर्स को दैन सार्स कोव 2। कोई अभी तक ह्यूमन केस तो नहीं आया और इसके सिम्टम्स भी अननोन है अभी, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा वेव्स 2025 इनिशिएटिव के अंदर। तो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है? फ्यूजन है ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ का, जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी तीनों आते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? जिसमें वर्चुअल इन्फॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड में जो है उसको ओवरले कर देता है, ठीक है। मतलब रियल वर्ल्ड आपको में अंदर क्या आपको अंदर डिजिटल डिटेल्स देखने को मिलती हैं जैसे इमेजेस, टेक्स्ट या एनिमेशन। वर्चुअल रियलिटी में तो सिर्फ आपको एक सिमुलेटेड डिजिटल इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप फुली इमर्स हो जाते हो, आप वो VR हेडसेट पहन के कोई भी जो है वो गेम्स खेल सकते हो या आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो, ठीक है। मिक्स्ड रियलिटी जो है वो दोनों का मिक्स मतलब ऊपर मिक्सचर है। डिजिटल और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ रियल टाइम बेसिस पर, ठीक है। तो वेव्स 2025 क्या है? इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, जिसमें आइडियाज़ कोलैबोरेशन होती है, इनोवेशन होती है विद इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सग्रेशिया पेमेंट। टॉपिक आपके इकानमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने कैश बंडल्स दिए हैं 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया अमाउंट दी है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड में लोग मरे उनके फैमिलीज़ को। एक्सग्रेशिया पेमेंट एक टाइप ऑफ पेमेंट होती है जो एक इंडिविजुअल या उनके फैमिली को मिलते हैं एक जो भी उन्होंने डैमेज सफ़र किया होता है, और इसमें जबकि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, तो मतलब एक तरह से बाय फेवर होता है या बाय वर्चू ऑफ ग्रेस होता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक्सग्रेशिया पेमेंट्स नहीं देती हैं क्योंकि कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं ताकि गुडविल मेंटेन रह सके लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जिनको जो विक्टिम्स के हैं उनकी फैमिली के साथ, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट यही करती है। एक्सग्रेशिया पेमेंट जो है वो टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जैग्रोस माउंटेन। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक जियोलॉजिस्ट ने कहा है कि हिली एरिया जो जैग्रोस माउंटेन्स इराक में सराउंड कर रहा है वो पुल हो रहा है अर्थ के अंदर। तो जैग्रोस माउंटेन एक मेजर माउंटेन रेंज है वेस्ट एशिया की। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि ये माउंटेन्स जो है वो ऑरोजेनिक एपिसोड्स के थ्रू बने हैं जब अरेबियन प्लेट जो है वो स्लाइड हुई है अंडरनीथ द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो ये एक नेचुरल बैरियर है बिटवीन सेवरल कल्चर्स और एम्पायर्स जो एशियंट और मॉडर्न वर्ल्ड्स में थे। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड टेम्परेट क्लाइमेट है, ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलिका ट्राइब्स। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने एक रेफरेंस दिया है सोलिका ट्राइबल पीपल को। तो सोलिका ट्राइब्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हैं जो मोस्टली तमिलनाडु और कर्नाटका में पाए जाते हैं। सोलिका लिटरली ट्रांसलेट होते हैं चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू में, और ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो लिव कर रही है इनसाइड अ टाइगर रिजर्व। ओके, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट है। ये बिलीव करते हैं को एग्जिस्टेंस विद द इन्वायरमेंट में। सोलिका पीपल प्रैक्टिस करते हैं नेचुरिज्म और एनिमिज्म। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पार्क स्ट्रेट। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 32 फिशरमैन हैं तमिलनाडु से जो अरेस्ट हुए हैं श्रीलंकन नेवी पर्सोनल द्वारा पार्क स्ट्रेट्स में। पार्क स्ट्रेट एक इनलेट है बे ऑफ बंगाल का बिटवीन साउथ ईस्टर्न इंडिया एंड नदर्न श्रीलंका। साउथ वेस्टर्न पोर्शन जो स्ट्रेट का है उसको हम पार्क बे कहते हैं। कई तरह की रिवर्स आती हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग वैगई रिवर। ओके, तो पोर्ट ऑफ जाफना जो है वो भी इसी स्ट्रेट में ही लोकेटेड है, लेकिन वो नदर्न श्रीलंका का पार्ट है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Supreme Court's view on gag orders. This topic is important for your governance section and also your social issues. Supreme Court has granted interim protection from arrest to an influencer and podcaster in connection with an FIR, multiple FIRs actually, reported against him over some remarks made by him. Okay, so Supreme Court has repeatedly ruled against gag orders, and it has said that uh, there should be minimal speech restrictions. Okay, court has imposed stringent conditions otherwise, while barring this individual and his associates from posting any content on social media until further orders. So these controversial restrictions, which are called the gag orders, they contradict prior Supreme Court rulings, which have cautioned against imposing excessive speech restrictions while granting bail for interim relief. So a gag order is basically a judicial or executive action which prohibits individuals from making public statements. So we have such orders falling under Section 144 of the CRPC, which allows the government to restrict public statements in cases of law and order concerns. Then we have Contempt of Court Act, which prohibits public discussion on ongoing legal cases. Article 19, Clause 2 of Indian Constitution, which allows for reasonable restrictions on free speech for security, public order, and morality. Courts have consistently ruled that speech restrictions must be proportionate and justified. Okay, so judges have the discretion to impose conditions while granting bail or interim relief, and courts have ruled that restrictions must not violate the fundamental rights. Legal experts also argue that social media ban that has been imposed by Supreme Court in this case is very excessive. If there were concerns, there are already legal options available under the IT Act and other media regulations as alternative legal measures rather than banning outrightly banning speech. The court could have resorted to those provisions. Okay, so what is the future of digital speech in India? So courts must decide when speech restrictions can be imposed as bail conditions. Government and judiciary must strike a balance between regulation and speech freedoms. Gag orders should be time bound and they should be subject to review. So the next topic is UGC care list scrapped. This topic is important for your um, governance section. So UGC has decided to discontinue the UGC care list of quality academic journals, which were first introduced in 2018. Instead, it will be providing a set of suggestive parameters for selecting journals based on eight criteria. So UGC Care was introduced in 2018 to combat the problem of predatory journals that publish research in exchange for publishing fees without checks like peer reviews. So publications in journals play a crucial role in institutional rankings, and quality of research publications directly impacts the credibility and funding of higher education institutions. So, due to the importance of journal publications, substandard and predatory journals proliferated, offering publication for a fee without rigorous peer review, which led to concerns about the academic integrity and India's global
research reputation. So that's why in 2019 UGC also highlighted the negative impact of publishing in dubious journals. Some investigations also revealed the over 300 publishers operating predatory journals in India. So UGC introduced the UGC Care in 2018, which is a dedicated UGC cell that assessed journals based on the strict quality protocols. So UGC Care, why it is being withdrawn now? So this list was introduced to ensure only reputable journals were considered for faculty selections, promotions, and research funding. But it faced several criticisms, including over centralization, delays in adding or removal of journals, limited inclusivity, lack of transparency. Okay, UGC has argued that decentralization will help combat predatory journals, make institutions responsible for evaluating journals, allow flexibility for institutions. Okay, UGC formed an expert committee to review the care system also, and it also uh, gave the review that this system should be withdrawn. Okay, so the next topic is International Finance Corporation. This topic is important for our economy section. So recently, IAFC has decided against investing in a proposed $40 million loan for waste to energy incineration projects in Gujarat. So IFC is a private lending arm of the World Bank, which was established in 1956 as a member of the World Bank Group. So it provides financing of private enterprise investment in developing countries. It also provides advisory services to encourage the development of private enterprises in nations which might lack the necessary infrastructure or liquidity for businesses. It also mobilizes capital from other lenders and investors. It is owned and governed by its member countries. Okay, so the president of the World Bank Group is also the president of the IFC. Okay, so the next topic is National Commission for Indian System of Medicine. This topic is important for your governance section. So recently, National Commission for Indian System of Medicine has completed the first phase of the Desh Ka Prakriti Parikshan Abhiyan. So, National Commission for Indian System of Medicine is the statutory body which provides for a medical education system that improves access to quality and affordable medical education. It consists of 29 members appointed by the central government. Uh, it consists of a post of chairperson, part-time members, presidents of the four autonomous boards set up under the NCISM, and it is it frames policies for regulating medical education and medical professionals of the Indian system of medicine. Okay, apart from other features. So the next topic is HKU5CoV2. This topic is important for your science and tech section. So a newly discovered bat coronavirus similar to the virus that caused COVID has been identified in China. It closely resembles the SARS-CoV-2 virus, but it belongs to the Merbicovirus subgenes, which also includes the virus which is responsible for MERS or Middle East Respiratory Syndrome. It can bind to human ACE2 receptors, but it has a lower binding affinity to human ACE2 receptors than SARS-CoV-2. As of now, there is no confirmed case of this virus in humans. Okay. So the next topic is extended reality. This topic is again important for your science and tech section. So XR Creator Hackathon is being organized by Wave Labs in association with Waves 2025 initiative of Ministry of Information and Broadcasting. So extended reality represents a fusion of immersive technologies encompassing virtual reality, augmented reality, and mixed reality. In AR and augmented reality, virtual information and objects are overlaid on the real world. This experience enhances the real world with digital details. Okay, whereas in virtual reality, users are fully immersed in a simulated digital environment. In mixed reality, digital and real world objects coexist and they can interact with the other one another in real time. So, what is Waves 2025? It's an initiative of Ministry of Information and Broadcasting, and it is designed as a pivotal platform for ideas, collaboration, and innovation within the media and entertainment industry. Okay. So the next topic is ex gratia payment. This topic is important for your economy section. So Ministry of Railways has handed over weights of cash and bundles of notes to provide 10 lakh rupees ex gratia to the kin of 18 deceased
people at the stampede in New Delhi railway station recently. Ex gratia payment is a type of payment made by an organization to an individual for damages or claims without recognizing any legal obligation. So, ex gratia means by favor or by virtue of grace in Latin. So, however, some organizations have used ex gratia payments to express their goodwill or to maintain good long term relationships with the payment receivers. Ex gratia payments are not taxable in India. Okay. So the next topic is Zagros Mountain. This topic is important for your environment section. So recently, a geologist has said that a hilly area surrounding the Zagros Mountain in Iraq is being pulled into Earth. So Zagros Mountain is a major range of mountains in West Asia, and scientists estimate that these mountains were formed during the orogenic episodes triggered by the sliding of the Arabian Plate underneath the Eurasian Plate. Historically, the Zagros Mountains have acted as a natural barrier between several cultures and empires of the ancient and modern worlds alike. So, this climate here is semi-arid temperate climate. Okay. So the next topic is Soliga tribes. This topic is important for your social issues. PM Modi has made a reference to the Soliga tribal people, which is a group of indigenous forest-dwelling people found mostly in Tamil Nadu and Karnataka. The term Soliga literally translates to children of bamboo. Soliga was the first tribal community living inside a tiger reserve. The traditional economy of Soliga is mostly based on shifting cultivation and collection of minor forest produce. They believe in coexistence with the environment. Along with adhering to Hindu customs, the Soliga people practice naturism and animism. So the next topic is Park Strait. This topic is important for your um, environment section. So in a fresh incident, 32 fishermen from Tamil Nadu were arrested by Sri Lankan Navy personnel on charges of poaching along the Park Straits recently. So Park Strait is an inlet of the Bay of Bengal between India and Sri Lanka. The southwestern portion of the strait is also called Park Bay. It receives several rivers, including the Vegai River, and it contains many islands on the Sri Lankan side. The port of Jaffna, the commercial center of the northern Sri Lanka, also lies on the strait. Okay, so these were our topics for today. We will meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.